हेलो दोस्तों, जावा यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली है काउंटडाउन लैच। बट इस काउंटडाउन लैच से पहले जो जानना चाहिए वो है बेसिकली सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड। और वो नहीं आता तो इस वीडियो को आप ना देखें, पहले मेरे सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड वाले वीडियो को देखें। उसका लिंक टॉप राइट कॉर्नर पे मिल जाएगा आपको। तो चलिए, जो मेन टॉपिक है वो काउंटडाउन लैच है। तो ये काउंटडाउन लैच बेसिकली जेडीके के अंदर एक मल्टी थ्रेडिंग या कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग का एक फीचर है जो बेसिकली जावा 5 से ही प्रोवाइडेड है। तो हमें ये पहले ये जानना है कि हम काउंटडाउन लैच बेसिकली कहाँ यूज़ करना चाहिए हमें। तो काउंटडाउन लैच अगर मुझे यूज़ करना है तो लेट्स एज्यूम कि मेरे पास बहुत सारे टास्क हैं। T1 टास्क, T2 टास्क, बंच ऑफ टास्क है मेरे पास, T3 है, T4 है। और ये सारे के सारे टास्क सपोज इंडिपेंडेंट है और ये सारे के सारे टास्क कंप्लीट होना ज़रूरी है बिफोर आई कुड स्टार्ट माई T5 टास्क। जो T5 टास्क है वो तभी स्टार्ट कर सकते हैं जब T1, T2, T3, T4 फिनिश हो जाएंगे। बट यस, इससे कुछ डिपेंड नहीं करता है कि T1 के बाद T2 स्टार्ट होना चाहिए, T2 के बाद T3। ये सब इंडिपेंडेंट है, ये सब पैरेलली हो सकते हैं। ये सारे के सारे टास्क एग्जीक्यूट इन अ पूल ऑफ थ्रेड हम बना सकते हैं और T1, T2, T3, T4 को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं पैरेलल में। और जब सारे के सारे टास्क ख़त्म हो जाएंगे देन ओनली वी कुड स्टार्ट आवर T5 टास्क। जब हमें ऐसी कोई कंडीशंस हमें फुलफ़िल करनी होती है तो जो बेस्ट टेक्नीक है वो काउंटडाउन लैच ही है, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, अपनी कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। T1 और T1, T2, T3, T4 बेसिकली सारे पैरेलल में फिनिश होंगे और T5 विल वेट। T5 मेनली हमारा मेन थ्रेड होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ऐसा लगेगा जो मेन थ्रेड है। मेन थ्रेड इन द सेंस ये है कि T5 ने ही बेसिकली T1, T2, T3, T4 टास्क क्रिएट किए हैं और इनको एक अलग थ्रेड्स में एग्जीक्यूट करने के लिए भेजा है। नाउ इट्स वेटिंग। तो उस केस के लिए हम काउंट लैच यूज़ करते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि T1 ने सपोज़, इफ आई जस्ट से T1 ने लाइक 100 सेकंड्स, 100 मिली सेकंड्स लिए, 100 मिली सेकंड्स लिए, इसने 200 मिली सेकंड्स लिए, इसने 300 मिली सेकंड्स लिए और इसने 400 मिली सेकंड्स लिए। क्योंकि हमने इन सबको पैरेलली किया है तो मोर और लेस 400 मिली सेकेंड्स के अंदर T1, T2, T3, T4 सारे फिनिश हो जाएंगे। एंड जस्ट आफ्टर 400 मिली सेकेंड्स आवर T5 थ्रेड विल एग्जीक्यूट नाउ। तो इसे अब इंटेलिजे पे देखते हैं हाउ वी कुड राइट दिस काइंड ऑफ अ कोड with the help of this countdown latch. So let's go to our IntelliJ. So first of all, we need to create some task. So let me just create a static class और let me just, I think so हमारा font size ठीक है. Let me just increase more. Okay, so we have to create a static class. I just, मुझे weather class बहुत पसंद है तो मैं इसे weather ही बना देता हूँ. तो let's create public string feed weather from server A एंड इसका बस मीनिंग है रिटर्न करना पार्टली क्लाउडी। और इसको हमें बेसिकली जस्ट, तो इससे पहले हम क्या करते हैं, अपने एग्जीक्यूटिव सर्विसेज बना लेते हैं जहां हम अपने T1, T2, T3, T4 टास्क को सबमिट करेंगे। तो एग्जीक्यूटिव न्यू फिक्स थ्रेड पूल साइज, लेट्स क्रिएट 4। ये जो वेर कीवर्ड है ये बेसिकली जावा 17 का फीचर है एंड आई एम रनिंग जावा 17 ऑन माई इंटेलिजे। सो
मतलब अगर कोई जावा 8 यूज़ कर रहा है तो दे कुड डायरेक्टली राइट एग्जीक्यूटिव सर्विसेज। इसमें टाइप इन्फ्रेंस है जावा 17 में। तो नाउ लेट्स सबमिट आवर टास्क। अब मुझे टास्क सबमिट करने से पहले आई नीड टू मेक श्योर आई हैव अ काउंटडाउन लैच। और मुझे बेसिकली T1 T2 T3 T4 टास्क, तो आई विल जस्ट गिव इट अ 4 बिकॉज सारे के सारे टास्क मेरे फिनिश होने चाहिए, देन माई मेन थ्रेड विल स्टार्ट। तो मैंने काउंटडाउन लैच 4 बनाया। लेट्स नाउ बेसिकली आई वुड से आई नीड टू सबमिट ओनली दिस। और मुझे यहाँ पे लैम्डा या कॉलेबल पास करना है, तो मैं लैम्डा का ये पास कर सकता हूँ। बट अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे बेसिकली वेदर कॉल करना है रीड। ओके, पब्लिक स्टैटिक कर देते हैं इसको भी, वेदर डॉट रीड फ्रॉम सर्वर ए। बट मुझे समहाउ जिस तरह हमें पता है कि वी आर गोइंग टू टेक लॉक ऑन दिस लैच, तो सेम ऑब्जेक्ट मुझे बेसिकली सेंड करना है सारे के सारे इस मेथड के अंदर स्पेशली। तो हाउ कुड आई डू दैट? तो व्हाट आई कुड डू, आई जस्ट डू दिस काउंटडाउन लैच हियर and and I could pass this countdown latch here. I think so this is nice. So now what I could do, 2 3 and 4, and just for more clarity what I will do, uh, let's create some more methods. 2 3 and 4, let's read from B, let's read this from C, let's read this from D, and let me just also print uh, from server A and server B, from server C, and from server D. Yeah, nice. And let's just do this B, C, D. Now what I have to do basically, this latch dot awaits. पहले हम ये वाला वेरिएशन देख लेते हैं बिना जिसमें कोई पैरामीटर पास नहीं करना होता। And this is what, and now basically the main thread can now proceed. जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे जो लैच है वो सेम ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो हमने काउंटडाउन लैच क्रिएट किया है। तो बेसिकली हमें इस लैच को बेसिकली पुल करना है, सारे टास्क को पुल करना पड़ेगा जहाँ पे उनको चाहिए। तो लेट मी जस्ट पुल माई लैच हेयर। बिफोर रिटर्निंग इट आई विल जस्ट पुल माई लैच। दिस इज व्हाट आई नीड टू डू एवरीवेयर। तो what we have now done, so we have 4 tasks which we have submitted to our executive services. इन टास्क के अंदर हमने अपने लैच पास कर दिए और हर टास्क ने जस्ट बिफोर रिटर्निंग अपना लैच को पुल डाउन कर लिया है। तो 4 बार हम पुल कर चुके हैं। तो जैसे चारों के चारों पुल कर लेंगे, दिस लैच डॉट अवेट will be true, it will return true basically, and I clearly see what it will return, it will return true. Oh, sorry, it's returns void. अगर मैंने इस पर टाइम आउट 100 सेकेंड्स आई थिंक, तो फिर ये हमें इट रिटर्न समथिंग। या जब हम बेसिकली टाइम यूनिट्स डाल देते हैं अंदर कि वी आर गोइंग टू वेट फॉर 100 सेकेंड्स, और 100 सेकेंड्स के अंदर अगर सारे के सारे टास्क ने अपने काउंटडाउन लैच पुल कर लिए हैं तो इट विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। बट एक केस के अंदर ये है, जब मैं कुछ भी पास नहीं करता तो बेसिकली इट रिटर्न्स नथिंग, इट विल जस्ट वेट फॉर एवर, और इट विल थ्रो एन एक्सेप्शन अगर किसी थ्रेड ने बेसिकली इस मेन थ्रेड को
द थ्रेड, यहाँ पे तो मेन थ्रेड ही है बेसिकली जो वेट कर रहा है। इस मेन थ्रेड को भी हमने अगर इंटरप्ट कर दिया है और ये अवेट पे है, तो बेसिकली इंटरप्टेड एक्सेप्शन थ्रो होगा, और हमने इंटरप्टेड एक्सेप्शन थ्रो कर भी दिया है। टू सी मोर प्रिसाइसली व्हाट आई विल डू, let's sleep this thread for 300 milliseconds. Sleep this task to for 200 milliseconds. Sleep our this task to 400 milliseconds, and this task for, consider we are sleeping this task for 500 milliseconds. And also let print something here. Server A thread is going to pull the latch. Server B is going to, this will be C and this will be D, right? Correct. So we have our task defined. We are pulling our countdown latch properly in all these tasks. And I think so if we run our program, we should see properly logs. Let's see this. But कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो गए हैं. Have we slept properly or not? Let me just check. Let it sleep for 3000 3 seconds, 2000 2 seconds, 4000 4 seconds, and 5000 5 seconds. This will make a clear indication how our console is going. Let's see this. तो अब हम देख सकते हैं सर्वर बी, सर्वर ए, सर्वर सी, सर्वर डी, and suddenly we have seen our main thread can now proceed, which is what we, जो हमें बिल्कुल चाहिए था हमने वो बिल्कुल ही कर लिया है. uh, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जब मैं अपने लेक्चर्स लूँगा इसके अंदर, तो मेरे इंग्लिश भी आएगी, हिंदी भी आएगी. मैं कोशिश करूँगा टेक्निकल टर्म्स सारे मेरे इंग्लिश में हो और जो वर्ब्स हैं, जो सेंटेंसेस हैं, वो हिंदी में हो. बट कभी कभी मैं ज़्यादा इंग्लिश बोल देता हूँ, तो उसके लिए माफ़ी. बट नेवरदलेस ये हमने बिल्कुल कर लिया. इसके अंदर एक वेरिएशन हमें ये देखना है कि जो बहुत प्रॉब्लमेटिक है और जो बहुत टफ है करना, वो ये है कि ऐसा भी हो सकता है कि जो लैच डॉट अवेट के टाइम पे what we are doing, we are going to interrupt our thread, main thread. And how we could interrupt our main thread, मुझे बेसिकली मेन थ्रेड इंटरप्ट करना है अपने, मे बी शायद फ्रॉम सर्वर ए वाले थ्रेड से मुझे मेन थ्रेड इंटरप्ट करना है. ठीक है, तो हमें ऐसा करना है कि जो हमारा दूसरा थ्रेड है, मेनली सर्वर ए वाला जो थ्रेड है, वहाँ से मुझे इंटरप्ट कॉल करना है मेन थ्रेड पे. तो लेट्स सी वो हम कैसे कर सकते हैं, बिकॉज हमें जो चाहिए अभी वो बेसिकली इंटरप्टेड एक्सेप्शन चाहिए लाइन नंबर 17 पे. तो हम उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, लेट्स हैव अ वॉर थ्रेड, मेन थ्रेड से आई विल से मेन थ्रेड. और इसका हम हैंडल कैसे ले सकते हैं, इज़ वेरी सिंपल. वी हैव गॉट द हैंडल ऑफ आवर मेन थ्रेड. अब इस मेन थ्रेड को बेसिकली मुझे सर्वर ए के अंदर पास करना होगा. और लेट मी जस्ट कैच दिस इन द पैरामीटर. I would say thread, I will say main thread. और मुझे कुछ नहीं करना है, इस मेन थ्रेड को बेसिकली मुझे इंटरप्ट करना है. And yes, I have interrupted my thread. After just 3 seconds, I will going to interrupt my thread. बट मुझे पता है कि मेरा जो थ्रेड सी है, सर्वर पर सी वाला थ्रेड, इट विल बी स्लीपिंग फॉर 4 सेकेंड्स. तो जस्ट बिफोर सारे के सारे काउंटडाउन लैच मेरे पुल हो जाएं, उससे पहले ही मैं इंटरप्ट कर दूंगा. तो आई एम एक्सपेक्टिंग
an error, interrupted exception at line number 17. So let's run this. Yeah, clearly we could see. And then of course we have got the line exception at line number 17, and server C, server D, both are basically have finished their work. Server A has also B has basically B has pulled down the latch. A was going to pull it, but then we could clearly see we interrupt the thread and we are here, and C and D has also C and D thread has also pulled down the latch. बट अब प्रॉब्लम ये है कि आप ये देखोगे कि यार ये वाला ये जो है दिस इज स्टिल रनिंग, तो वी नीड टू सी दैट व्हाई दिस इज हैपनिंग. ओके नाउ वी रन इट अगेन. जो प्रॉब्लम थी वो काउंटडाउन लैच की नहीं थी. इवन हमने यहाँ पे सपोज मैं दोबारा से थ्रेड को इंटरप्ट करता हूँ, मेन थ्रेड interrupt, and let's run this program again. We could clearly see an exception has been thrown when the main thread was waiting at the line number 18. But the problem was our program has not terminated. और why it has not terminated? It's because हमने क्या किया है, एग्जीक्यूटिव सर्विसेज को शट डाउन नहीं किया है. दिस वाज द मेन रीजन. And let's shut down our executor, and I would suggest let's politely shut down our executor and let's just do it right now here. Now what I will do, again run it, and let's see our programs terminate properly or not. And this time we could clearly see the red button has now gone into gray, so the program has terminated. So I think so we have seen one of the patterns. एक नया पैटर्न भी देख लेते हैं awaits के अंदर. We could even tell the main thread you have just to wait for few minutes or few seconds or few milliseconds. Till then, if all the threads have completed their task and pull down the latch, it's okay. Otherwise we just return it false and proceed ahead. सपोज मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि मुझे सिर्फ 2 सेकेंड्स के लिए वेट करना है, एंड देन आई विल जस्ट प्रोसीड. तो मैं इसको रिजल्ट में ले लेता हूँ. दिस विल रिटर्न बूलियन, एंड इफ आई जस्ट प्रिंट द रिजल्ट, आई थिंक so it should come false now. Let's run this. Clearly see the result is false, and that's it. Even though we have interrupt our thread, this awaits will never going to throw interrupted exception. It is always going to return false, and if everything is okay it will return true. And let's watch, let's just comment out this line interrupt, and let's run this program again. We could clearly see we have got the result as true. I think so आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी काउंटडाउन लैचेस के लिए. एक बार बैक टू नोट्स हम चलते हैं और एक बार दोबारा समझते हैं. Let's see the countdown latch in a nutshell now to end this video. So we have this task T1, and this is, suppose this is our timeline. T1 is running from here to here. Task T2 was also running from here to here. T3 have started from here and it is running from here till this time, and suppose T4 is the task which is running till here. And this is our, I would say, consider this as a
executor services. These are our executors services running in their own threads, and this is our main, basically, main thread. Main thread has invoked T1, T2, T3, and T4. It has invoked this, it has invoked this, it has invoked this, it has invoked this, and submitted to the executor services. Now, at this point in time, main thread is waiting. At this point in time, the await is happening. Basically, await is happening from here itself. Main thread is awaiting from here itself, and it awaits for this much duration. At this point in time, it has got the answer from all the countdown latch, and at that point in time, the latch is basically open, and the main thread can start executing its further task. So this is some kind of a theory of countdown latch which I could explain on a piece of paper. So I think so everybody has got the gist, and that's it. So let's meet on some next video, maybe on the cyclic barrier. Till then, bye bye.